A warm welcome to all of you. Today we are going to discuss question answers of chapter 12 reproduction in plants. We are starting with very short answer questions. Question number 1. What is the process of fusion of male and female cell called? Answer is fertilization. Question number 2. Name one seed that is dispersed by wind. Answer is maple seed. Question number 3. Why is reproduction necessary for organisms? Answer. It is essential to continue life on this planet. रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और ये एसेंशियल है, मीन्स ज़रूरी है लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए अर्थ पर. क्वेश्चन नंबर 4. नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. आंसर. Flowers are the reproductive parts of a plant. Question number 5. How do the following plants reproduce? Part A Bryophyllum, Part B Potato. Answer is Bryophyllum. Bryophyllum reproduces by leaf and potato reproduces by stem. Now Part E, short answer questions type 1. Question number 1. What do you mean by the vegetative parts of a plant? Answer. Root, stem and leaves are the vegetative parts of a plant. These parts can be used for asexual reproduction. Question number 2. Which plants reproduce by spore formation? Answer. Plants like ferns, mosses and many fungi reproduce through spore formation. Question number 3. Where does fertilization occur in plants? Answer is fertilization occurs in the ovary of a flower. Question number 4. Define pollination. Answer is the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called pollination. Question number 5. How does yeast reproduce? Yeast reproduce by budding. A small bulb-like projection called the bud is formed in the body. The bud grows in size and finally detaches itself from the parent body. In this manner, new individual is formed. Part F, short answer questions type 2. Question number 1. List different methods of asexual reproduction in plants, giving one example of each. Answer is different methods of asexual reproduction in plants are: number 1 budding, and example is yeast. Yeast reproduce by budding and this is asexual means of reproduction. Second method is fragmentation and example is Spirogyra. Third, spore formation, example ferns. Question number 2. Differentiate between self-pollination and cross-pollination. Answer is self-pollination. In self-pollination, pollen grains are transferred from anther to the stigma of same flower or other flowers on the same plant. Cross-pollination. In cross-pollination, pollen grains are transferred from the anther to the stigma of a flower of another plant of the same kind. सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा तक, सेम फ्लावर के या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर तक. बट इन क्रॉस पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा तक, बट फ्लावर्स जो होते हैं वो दो अलग अलग प्लांट्स के होते हैं बट ऑफ सेम काइंड. क्वेश्चन नंबर 3. When does a seed start germinating? Answer is the seed begins to germinate when it gets the favorable conditions.
फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर ही सीड्स जर्मिनेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which two parents, one male and one female are required. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के पेरेंट्स की नीड होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल. The offsprings have a combination of inherited genes. It occurs by the formation of seeds, while asexual reproduction is a type of reproduction in which only one parent is needed in offspring. That is genetically identical to the parent. In plants, asexual reproduction occur without seeds. asexual reproduction में सिर्फ एक ही पेरेंट की नीड होती है और ये विदाउट सीड्स होता है. क्वेश्चन नंबर 5, what happens during fertilization in plants? Answer, fertilization is the process of fusion of male and female gametes. A liquid containing sugar is secreted by the stigma of each flower. Fertilization मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूज़न का प्रोसेस है. एक लिक्विड सिक्रीट होता है फ्लावर्स में जो कि स्टिग्मा से सिक्रीट होता है. The pollen grains respond to this liquid and produce a thin tube called pollen tube. Pollen grains इस लिक्विड की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं और एक ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं जिसे पॉलन ट्यूब कहा जाता है. इट कैरीज द मेल सेल और ये ट्यूब मेल सेल को कैरी करती है. इट ग्रोज अंटिल इट रीचेज द ओव्यूल. ओव्यूल तक पहुँचने तक ये ग्रो करती रहती है. एंड एंटर्स इनटू इट और लास्ट में ये ओवरी में एंटर करती है. दिस the zygote gets formed when the male cell moves into the ovule and gets fused with the egg. और जब ओवरी में मेल सेल और फीमेल सेल मीन्स एग का फ्यूज़न होता है, देन zygote is formed. Okay, and this process is called fertilization. So students, that's all for today. Do this work in your science notebook. Thank you and have a nice day.